ही continue करना हमने. And the first thing that we have to talk about is the limit function and continuity. We have to look at the relation of a limit function of a sequence of or a series of continuous functions and whether that continuity is passed on to the limit function or not. Uh, First, let us begin with an example. Indeed, let me take an example. Let us take this sequence of functions f and x is equal to x to power n, and I'm taking the domain of each function, this closed interval 0, 1. Then, as we have already seen that the limit function f of x, let me denote of this sequence, we know that अगर आपके पास if x equals to 1 तो it will be 1, क्योंकि x to power n अगर x 1 है तो it will be 1. तो अगर आपके पास 0 less than or equal to x less than 1 है, then we know that x to power n की limit जो होती है as n goes to infinity is 0. So this is the function. And what we can observe now, you observe this thing, that means this is the pointwise limit. This is pointwise convergent. Also note that this sequence fn converges pointwise to the function f. This is we have already seen that you can see from the previous unit. But this convergence is not uniform. We have also proved this that why this is not uniform convergence, but it is not uniformly convergent. Uniformly convergent. So this is it. Now, what you have to observe here is the following. Look at that each function which is f and x is equal to x to power n, और ये functions continuous हैं. Each function is continuous and this closed interval 0, 1. This is continuous, but what about the limit function? Limit function ये है. F of x कैसे defined है? F of x is defined as it takes the value 1 when x is equal to 1 and it takes the value 0 when x is strictly less than 1 and greater than or equal to 0. And if you look at the graph of this function, can anybody can anybody guess whether this function f is continuous or not? Any guesses? You should be knowing it. It's quite obvious that it is not continuous. No one. Not So, continuous. so yes, it is not continuous. You can check it using whatever continuity you know, whether you आप इसकी limit करके, but it's not continuous at x equals to 1. क्योंकि इसका ग्राफ से आप आइडिया लगा सकते हैं x 0 और लेस देन जब आपके पास it is equal to 0, बट जब आप 1 पे पहुंचते हैं तो 1 पे इसकी वैल्यू सीधी शूट करती है, 1 पे टेक्स द वैल्यू 1. तो आपके पास 1 पे दिस इज ऑलवेज discontinuous, but this function is discontinuous at 1. So एक चीज यहाँ से हो गई कि आपके पास under pointwise convergence limit function, ये fx लिमिट फंक्शन बोलते हैं इसको, दिस इज अ लिमिट,
limit function of a sequence of continuous functions may not be continuous. So this is it. Now we want to see a condition जिसका जो condition हमें गारंटी दे दे कि लिमिट फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस होगा अगर आपके पास फंक्शंस भी कंटिन्यूअस है सीक्वेंस में एंड दैट्स नथिंग बट हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है क्योंकि यहाँ मैंने लिखा था कि कन्वर्जेंस आपकी देखो यूनिफॉर्म नहीं है तो अगर यही कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होती तो आपके पास कन्वर्जेंस या आपके लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है एंड देन फॉर दैट वी हैव अ थ्योरम it states that suppose fn is a sequence of continuous functions on some set A, and we further suppose that fn converges to another function f uniformly. Now the convergence I'm taking is uniformly on A, then the limit function f is continuous function on A. Continuous on A. So this is the way. That means uniform convergence is something that preserves this continuity. जो continuity को limit function तक ले जाती है. अगर functions के ऊपर continuity है तो it passes on to the next limit function and the proof has no big issue. You just have to use the definition of continuity of a function and the definition of the uniform convergence. But let me recall for your reference, let me recall what is a continuous function. Let us take a point C in A, then it is said that we say that a function f is continuous at this point C if for each epsilon greater than 0 there is some corresponding number, there is some number delta which depends upon epsilon and the point C as well, such that the distance of the image of x under f from the image of C, fx minus f of C ka mod is the distance of these 2 points, is less than epsilon whenever the distance of point x from C is less than delta. So this is the definition, epsilon delta definition जिसको आप usually जानते हैं of this uniform continuity of a function. It says that कि जब आपके पास पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम है तो उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस के बीच भी डिस्टेंस कम होगा, they will be close to each other. So we have to use this definition and uniform convergence की definition आप जानते ही हैं. So let's try to prove now the theorem. Theorem में हमारे पास हर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है और हमें लिमिट फंक्शन को वो प्रूफ करना है, कंटिन्यूस प्रूफ करना है. तो let us take some point C in A. So we have to prove this function to be continuous on A. We have to prove it to be continuous at each point of A. So and let us take some epsilon greater than 0 also. Now, since this given sequence converges to F uniformly, so by using the definition of convergence, there is some number h which is depending upon h epsilon by 3. I'm taking epsilon by 3 such that
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाइएगा, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स will be less than epsilon by 3 for every n greater than or equal to h and x in A. This follows from the definition of uniform convergence. Now, for n is equal to h and using triangle inequality, आप लोग देख पा रहे होंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी कितनी यूजफुल चीज है। तो बहुत सारे बच्चे आप में से ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी प्रूफ नहीं कर पाते माइनर में और फेल हो जाते हैं। तो using triangle inequality, let me check. What we have to do, we have to prove the continuity of the function f at c. तो उसके लिए हमें ये estimate निकालना जरूरी है कि f of x minus f of c क्या है। तो what I'm going to do, I'm going to add and subtract f h of x plus f h of x. Then what I have to do, I'm going to again add and subtract the same thing f h at c प्लस एफ एच एट सी माइनस एफ ऑफ सी जो यूजुअल है। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। लेट अस राइट इट टू बी लेस देन और इक्वल टू, तो एफ एक्स माइनस एफ एच एक्स को एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, प्लस फिर एफ एच एक्स माइनस एफ एच सी को एक में रख लेते हैं, प्लस पीछे हमारे पास बचा जो दैट इज एफ एच एट सी minus f at c. Yeah, this is it. Now, look at this thing. This inequality in red box says कि सीक्वेंस की टर्म एफ एन और फंक्शन एफ का जो डिस्टेंस है एट पॉइंट एक्स that is less than epsilon whenever you take n to be greater than or equal to h. तो इन पर्टिकुलर आई हैव टेकन हियर n इक्वल टू h, तो n इक्वल टू h के लिए भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो दैट मीन्स आपके पास x कहीं पर भी हो, x जस्ट नीड्स टू बी इन a। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है इस इनइक्वालिटी में बॉटम में, दिस इज द फर्स्ट टर्म, लेट मी नेम देम, दिस इज फर्स्ट टर्म and then this is, let's call it second term and this is third term. सो फर्स्ट टर्म में आप इनइक्वालिटी रेड बॉक्स की यूज कर सकते हैं, तो क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वजह से एफ एक्स माइनस एफ एच एक्स विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, प्लस मिडिल वाली इनइक्वालिटी को एज इट इज रखिएगा, वी डोंट हैव एनीथिंग क्योंकि यहाँ कोई का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हम यूज कर सकते, यहाँ फंक्शन है एफ एच एट एक्स माइनस एफ एच एट सी, प्लस लास्ट वाली जो थर्ड वाला टर्म है, थर्ड में भी आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूज कर लो आप, क्योंकि एच आप ले रहे हैं विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच और सी इज अ पॉइंट इन ए, सो एफ एच माइनस एफ सी हैज टू बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3. So remember this inequality, let me this inequality be denoted by star. तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि f जो स्मॉल एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन, बट कंटिन्यूटी की वजह से ये तब होना चाहिए जब x और c का डिस्टेंस लेस देन सम डेल्टा है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ईच टर्म इन दिस सीक्वेंस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सो इन this inequality star we have a function f sub h. This is a term of the sequence, so this is also a continuous function. So let's invoke the continuity of this function f h and see what happens. Now since this function f h is continuous, this is continuous, so epsilon already given है हमारे पास, तो I can say that there is, it is continuous on whole of A, तो in particular C पे भी continuous है, so there is some number delta which obviously depends upon epsilon by 3 I will take, which will depend upon C also, तो इसकी dependence f h पे भी रख सकते हैं क्योंकि sequence के पास infinitely many terms है,
तो जब आप एफ एच की जगह एफ एच प्लस वन ले लोगे, हो सकता है वहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाए, तो लेट्स टेक, और इसको शॉर्ट में लेट मी डिनोट इट ओनली बाय डेल्टा, एंड दिस इज जस्ट फॉर टू फोकस के ये डेल्टा might change with epsilon c and the function. So this is some positive number such that what it says that f h at x minus f h at c will be less than epsilon by 3 whenever for any point x in A we have this inequality. The distance of x from C is less than delta. Okay, now for any point x in A and satisfying this inequality x minus c less than delta, what we are going to get, we are going to get this number fhx minus fhc less than epsilon by 2. So this can be used here in this inequality star. That means I can replace it with epsilon by 2 and epsilon by 3. So and then see the right hand side turns out to be, so I'm writing it from star. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एफ एक्स है और राइट हैंड साइड में एफ ऑफ सी है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, एप्सिलॉन बाई 3 है, प्लस आपके पास ये टर्म है एफ एच एट एक्स माइनस एफ एच एच सी plus epsilon by 3. But now we are choosing the distance of x from C to be less than epsilon. So this number fhx minus f of C will be replaced by epsilon 3. And last we have already epsilon by 3. And so we are adding epsilon by 3 times. So this is equal to epsilon, and hence what we can conclude now, we concluded that for given epsilon greater than 0, we were able to find a number delta which depends upon x and c. It depends upon h also, but important है कि it must depend upon x and c. Sorry, x and c नहीं, which depends upon epsilon and the point c जिस पे आप continuity check कर रहे हैं, such that the definition of continuity is satisfied this by this function f at c, and hence this shows that f is continuous at x equal to c. And c was an arbitrary point in A, so it means that this function f is continuous at each point in A. So this was all about the proof of this function. So any queries, any doubts about this? सर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन नॉट, सर उससे कंटिन्यूस कैसे प्रूव हुआ? अरे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, मैंने यहाँ बिगनिंग में दी है ना, ये है ना कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। कैन यू सी इट? सर ये तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लग रही है। नहीं, कहाँ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है? कन्वर्जेंस, don't you remember the definition of continuous function? I have remember lower limit and upper limit. सर इस डेफिनेशन से तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी को कन्वर्ज कर रहा है। हेलो हेलो
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। take नो सर, सर ओनली वॉइस इज नॉट, ऑडियो इज नॉट हियरिंग, ओनली वीडियो इज। यस सर। so now what we are going to give you an example. What we noticed in, let me first write the remark that uniform convergence is a sufficient condition for a limit function to be continuous, but not necessary. As we saw that limit function, जब आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो कंटिन्यूस फंक्शंस का लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं हमेशा कि जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो तब ही लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस होगा. पॉइंट वाइज कुछ सिचुएशंस में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में भी आपके पास लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है. एंड द एग्जांपल वही प्रीवियसली वाली एग्जांपल ले लूंगा मैं. आई एम गोइंग टू कंसीडर द फंक्शन एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स टू पावर एन, बट अभी मैं डोमेन चेंज कर रहा हूँ. अभी मैं डोमेन क्लोज इंटरवल 0 1 नहीं रख रहा हूँ, अभी मैं ओपन इंटरवल 0 1 रख रहा हूँ. ठीक है. देन लेट अस सी द लिमिट फंक्शन. हर एक पॉइंट पे लिमिट अप्लाई करो. दिस इज और ये हमें मालूम है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है. एफ एन एक्स इक्वल्स टू लिमिट n tends to infinity x to power n, and since अभी आपको मालूम है कि x जो है it is strictly less than 1 or greater than 0, तो now in this case the limit is 0. that is इस केस में आपके पास जो लिमिट फंक्शन है f of x, this is equal to 0 for each x in this open interval 0 1. And you know this is a constant function, or constant function is always a continuous function, so f is continuous. So in this case you have continuous function even though the convergence is not uniform, and this justifies this remark that this uniform continuity, uniform convergence is just a sufficient condition but not a necessary condition. Is it okay? So okay, then the next thing and the last thing in this segment is about, okay, it just got rotated. I don't know how. I will rotate it back. I return it. Okay. And the last thing is the same result has to be stated for series of functions, and it doesn't require a much proof. It requires only the fact that
sum of continuous functions is continuous. But let me say, suppose that the series of functions fn is uniformly continuous, uniformly convergent on some set A, and each fn is continuous on A. Then it says that the limit of this series, let this limit be denoted by f, which is the sum fn, is a continuous function, is a continuous function. और इसके लिए हमें कोई एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन यूज नहीं करनी है, सिंपल सा है कि let us take Sn of x, the nth partial sum of this series, which is f1 of x plus f2 of x plus so on up to fn of x. Now, since each fn is continuous function, and we also know that sum of continuous functions is continuous. Sum of continuous functions, this is finite sum, but it is not infinite sum. Sum of continuous functions is continuous. So it follows that your Sn is also continuous. Sn is continuous. It follows that Sn is continuous. Now, that is to say, this sequence of partial sums is a sequence of continuous functions. It's a sequence of continuous functions. This is a sequence of continuous function. Now, according to hypothesis, we have that this series Fn is uniformly convergent. Is uniformly convergent to the function f, but by the definition of uniform convergence of series, we know that where the series is convergent whenever, if and only if the sequence of partial sums is convergent. That implies that this sequence of partial sums f Sn is uniformly convergent to the function f, and hence from the previous theorem that we just did, it stated that whenever you have a sequence of when you have a sequence of continuous functions, here we have a sequence Sn, and as I said, Sn is a sequence of continuous functions, and that theorem says that then the uniform limit of this sequence is continuous, and hence it follows that f being a uniform limit of this sequence Sn is continuous function on whatever set it was. So this was all about the relation of uniform convergence with the continuity of a limit functions.